Good evening, everyone. I am CA Neha Fadke, and like every Wednesday, we come up with someone who is practicing more than what we are in AI tools and helping us share with what they have learned. So again, this time we are thankful to CA Pratik Sadrani. He is from Nagpur and he is also an Aura faculty. So, thank you, Pratik, for arranging this, agreeing to be a part of this series which we are doing on AI tools. And although maybe we have already gone through these tools uh, before, but definitely the way we are looking forward to it, because I am sure this will be helping us and guiding us in a specific way, which you have mentioned. So thank you, Pratik, for actually agreeing to be a part of this. And normally we do not. I do not ask for the introductions of the speakers because this is more of an setup where we all are interacting. So I would request you to start the session by briefly introducing yourself to our members who have joined here, and then take it forward. So over to you, Pratik. And before you start, I want to ask Deepak, have you started the YouTube live? Deepak? Yes, it is live. Yes. Okay. Okay, over to you, Pratik. Thank you very much, ma'am, for the intro. So, I am CA Pratik Sadrani. I am basically from Nagpur, doing majorly practice in litigations, and now I am leveraging AI tech in litigations. So, this is my brief intro. And since we have very little time, I would like to start the presentations and the demonstrations which I have prepared for everyone. First of all, I would like to thank ICAI Pune branch for inviting me in this amazing session and allowing me to contribute my knowledge and studies related to this topic. So I will directly jump to the demonstration since we have, I will 30 to 35 minutes. I will try to complete maximum things and by going the cases, I will demonstrate you how we can leverage AI for tax litigations. तो हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टैक्स लिटिगेशन से रिलेटेड हम लोग एआई कैसे हम लोग लेवरेज कर सकते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिस से रिलेटेड राइट सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे आज मैं आपको सबसे फर्स्ट तीन टूल्स के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं वन इज द मोस्ट पावरफुल टूल कॉल्ड नोटबुक एलएम second perplexity and third Claude. These three tools we will be using. Along with these three tools हम लोग दो tools additional और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक chat gpt and एक notice cpc. There is one good tool called notice cpc which is relevant for today's topic. What we will do first, we are going to see how we can do the research with the help of AI. हम लोग केस लॉस को कैसे रिसर्च कर सकते हैं इफेक्टिवली सेकेंड देन विद द हेल्प ऑफ नोटबुक एलएम वी विल सी हम लोग बड़े जजमेंट्स में से हमारे रिलेवेंट पोर्शंस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे से रिलेवेंट है Third, I will teach you how we can draft grounds of appeal, how we can draft written submissions and statement of facts, which are relevant for filing of appeals before CIT appeals and tribunal. In this way, we are going to cover today's session. There will be last one more section where I will let you know how we can use a tool called Notice CPC in order to track the all the notices and all the communications which are being received from department. So first, I would like to share my screen. My screen is visible. Yes, Can yes, it is visible. perfect, perfect. Yes. Thank you. So
आई जस्ट वांट टू नो इन चैट बॉक्स, आप लोग में से कितने लोगों ने नोटबुक एलएम ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सो दैट आई कैन डीप डाइव ओनली टू द एक्सटेंट विच इज रिलेवेंट फॉर टुडेज टॉपिक. आई जस्ट वांट अ क्विक रिस्पॉन्स इफ. ओके, I can see few have used and few have not used notebook LM. We are aware of ChatGPT, we are aware of Claude. Yeah, there are some people who have not at all used notebook LM. Okay. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. हम लोग जैसे मैं चैट में देख सकता हूँ बहुत लोगों ने यूज नहीं भी किया है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. जो इफ समवन नोज द टूल देन बी विथ मी फॉर सम टाइम and then we will deep dive into the topic. Okay, so I am starting with the topic. लेट्स से सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई एक केस यहाँ पे हम लोग लेते हैं. वी आर अ जीएसटी लिटिगेशन एक्सपर्ट एंड हमें हमारे क्लाइंट को कुछ रिसर्च करके देना है पर्टिकुलर टू आईटीसी केस. आईटीसी से रिलेटेड क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है एंड हाउ वी कैन रिसर्च केस लॉज रिलेटेड टू इट. Okay, so I'll just read prompt for you in a minute. This is the prompt. Assume you are a GST law expert with the ability to interpret statutory provisions, analyze case laws, and validate judgments through official government website. I have prepared this prompt. What I will do, I will share this prompt after the session in the group so that everyone can have access with this prompt. So what I am doing, I am using this prompt for doing my research related to case law. अगर हमें कोई भी टाइप का रिसर्च हमारे पास कोई भी केस आता है, आई एम टेकिंग अ केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हियर. कोई भी टाइप का केस हमारे पास आता है तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइल एनी अपील और इन एनी रिप्लाई बिफोर सीआईटी और असेसिंग ऑफिसर. सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो रहता है रिसर्च, कि हम कैसे कोई चीज का रिसर्च करके हमें उसमें क्या ग्राउंड्स लेना है, हमें उसमें क्या सबमिशंस देना है. अगर सबमिशंस देना है तो हम रिलेवेंट जजमेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें. फॉर रिसर्च, as per my experience which I am using, you can use perplexity deep research function, you may use Gemini deep research function, and you may use ChatGPT deep research function for this activity of doing research of case law. I am doing this activity with the help of perplexity. I'm just going to, this is the Perplexity AI tool. I have just made the login procedure here. Once you do the login, my screen, whether my screen is visible or not, can anyone tell me? Yes, visible. Okay, I'll just demonstrate it. I'm just pasting this prompt here. You may use deep research function which is given here. In order, you just by clicking this deep research function, you can have the access related to perplexity. Deep research function, if you have a pro version, आपको multiple आपको options मिल जाएगा. If you have a free version, you can do it once daily. करंटली एयरटेल का सिम से डायरेक्टली प्रो वर्जन भी अभी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फॉर परप्लेक्सिटी. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट गिवन द प्रॉम्प्ट. This prompt is related to GSTR 1 and 3B ITC related issue. I have just given the case study that supplier ने GSTR 1 और 3B में ITC फाइल नहीं किया है, उसके कारण जो नोटिस है डिपार्टमेंट ने वो असेसी को भेजा है. असेसी इज माय क्लाइंट. नाउ मैं ये रिसर्च कर रहा हूं कि कैसे डिफरेंट जजमेंट्स मैं निकाल सकूं इन ऑर्डर टू गिव द रिप्लाई फॉर दिस शो कॉज नोटिस, राइट. सो आई हैव जस्ट copy pasted this prompt here and I have used the deep research function of perplexity. You may use similar function in Gemini.
In Gemini, what you can do, just log in. After doing the login, there is a function called deep research. Similar function you may use for deep research function you may use for this in Gemini also. Similar function is there in ChatGPT. So हमें कोई भी जजमेंट्स का या कोई भी कंटेंट का जो हमें लिटिगेशन से रिलेटेड सबमिशन करना है, उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट यूज deep research function of these three powerful tools. Am I okay with this? Can anyone confirm? Yes. Perfect. So this was the thing how we can do the research of case laws. Now I will start with the summarizing and the important features of NotebookLM for case law research. This is the answer which has been given by the Gemini. In Gemini, there is a deep research function. It has analyzed the entire steps it has given me and it has started doing research. And let's see what Perplexity has done for us. So the deep research function is being done by Perplexity and the output has already been given by Perplexity. I'll just quickly show you the output which has been given. So this is the output which is given. अब मेन डीप रिसर्च का जो मेन फंक्शन है, इसमें एक ऑप्शन हमको ये मिलता है कि हम अगर हम लोग प्रॉम्प्ट में ये स्पेसिफाई कर दे कि भाई आपको कौन से वेबसाइट से रिसर्च करके हमको जजमेंट देना है, इसमें मैंने इंडिया कानून, टैक्स गुरु, सीबीआईसी, आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड ऑल दी websites from which I can get the judgments, right? You can have any type of case. You just in the first one or two para you need to specify your case and then you can have a common prompt के जहां से आपको judgments और important links जो AI tool scan करे वो आप वहां पे आपके prompt में ही specify कीजिए. So in this way you can do the deep research function and you can have a good case laws in hand. See, these are the landmark judgments which are there, and I'm not telling you to blindly rely on this judgment. Just cross verify the name of judgments from good websites like Legal Kanun and other. So you may use this in order to reduce the time of your research for case laws, right? You may not blindly rely on this. आपके पास जैसे ही आंसर आ रहा है, ये आंसर को आपको क्रॉस चेक करना है, ये जजमेंट्स को क्रॉस चेक करना है फ्रॉम few websites as well. So this is how you can do research for different types of judgments in tax litigations. Now I am jumping to another tool called NotebookLM. In NotebookLM मैं आपको पहले केस स्टडी ब्रीफ करता हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आप सिंपल गूगल कीजिए NotebookLM. NotebookLM में जाके दिस स्क्रीन विल अपीयर. आपको साइन इन करना है विथ योर ईमेल आईडी. Then this screen will appear and it will tell you for creating new notebook. It's very simple. Create new notebook. You can have press this. जैसे ही हम लोग क्रिएट न्यू नोटबुक करते हैं, हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं टू अपलोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. वी कैन अपलोड वेबसाइट्स, वी कैन हैव गूगल ड्राइव लिंक, वी कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट एनी लिंक्स, देन वी कैन हैव यूट्यूब लिंक्स, वेबसाइट लिंक्स, any document, source document we can attach here in order to research with the help of NotebookLM. Now in order to save time, what I have done, I have created one notebook and half hour before only. So I will show you this notebook first. So this was the screen. After just doing login, this screen will appear. आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे एड सोर्स का ऑप्शन है. यू कैन हैव दिस एड सोर्स बटन and you can attach as many sources as you want. There are 50 sources we can attach in single notebook.
So far it's a free tool right now. What exactly we are going to do? I am showing you one document, bulky document. Let's say मुझे सेक्शन 201 शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, ये इनकम टैक्स का एक नोटिस आया हुआ है मेरे एसएससी के पास से. शॉर्ट डिडक्शन सेक्शन 201 से रिलेटेड what I had done, I had gathered many judgments, different Supreme Court, High Courts, then different tribunals. इसका मैंने एक सिंगल पीडीएफ बनाया हुआ है. All these judgments I have kept in a single document. Now my case is कि भाई मुझे शो कॉज नोटिस आया हुआ है फॉर सेक्शन 201 डिफॉल्ट. मुझे इससे रिलेटेड एक तो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी बनाना है, एंड वंस मुझे एक ऑर्डर पास किया है डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मुझे सीआईटी या आईटेट में अपील फाइल करना है. ओके, सो दिस इज द केस विच वी आर गोइंग टू कवर. हम ये एक्टिविटी कैसे विद द हेल्प ऑफ नोटबुक एलएम कर सकते हैं, कैसे हम लोग ग्राउंड्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे रिटर्न सबमिशंस ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली देखते हैं. सो सबसे फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, मैं मेरे नोटबुक जो मैंने क्रिएट किया है वो नोटबुक में मैंने जितने मुझे जजमेंट्स डालना है, what I have done, I just search the many judgments from different websites. If possible, you may have this feature of add sources as well. यहाँ पे एक feature है discover sources. You may use those functions as well, but it's always better कि भाई जो field में आप practice कर रहे हैं उसका अगर आपके पास judgments already है तो you can have a judgment digest and you can upload it in notebook LM. Okay, so now what I have done similar thing, just I have uploaded this bulky document in notebook LM. This was the document. This document was of nearly 162 pages, right? इसमें सभी टाइप के जजमेंट्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और कुछ ट्राइब्यूनल्स के भी जजमेंट है. द केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 201 शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस. इससे रिलेटेड हम लोग अपील और शो कॉज नोटिस फाइल करना सीख रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट मैंने ये अटैच कर दिया है यहाँ पे नोटबुक एलएम में. कहां से किया? एड सोर्सेज ऑप्शन से. ठीक है, एड सोर्सेज में आप जाएंगे, सिंपल आप इसको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे अटैच कर दीजिए. अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट, जस्ट मैंने अब 1 आवर पहले कुछ प्रॉम्प्ट्स अच्छे डिराइव किए हैं. आई विल शेयर दिस प्रॉम्प्ट्स. सो आई एम डूइंग दैट रिसर्च एंड प्रॉम्प्ट का एनालिसिस मैं यहाँ पे नोटबुक एलएम के थ्रू कर रहा हूँ. सबसे फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, सी आई विल रीड द प्रॉम्प्ट फॉर यू. I am telling Notebook LMS, you are acting as a senior tax litigation research associate. From the uploaded single PDF containing 10 court or tribunal judgments, identify each judgment separately and prepare a structured case brief for each. For every case, extract and present in a table case number, court, assessment year, key facts, issues, final decision, sections of income tax, or whether decision is in favor of department. Ensure accuracy and do not mix facts of different judgments. This is the prompt which I am copying and I am just pasting in Notebook LM after selecting this judgment source which I have given. So I have just given the prompt in Notebook LM. Notebook LM has started doing activity for me. ये जजमेंट को मल्टीपल बड़े बल्कि में से आपको टू द पॉइंट जो आपके काम का है रिसर्च, या हम लोग जैसे नोटिस आता है तो सबसे फर्स्ट हम लोग को रहता है कि फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट, हम लिखना कहां से स्टार्ट करें, ग्राउंड्स कौन से बनाए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हम लोग क्या लिखे, ये हम लोग को सबसे पहले इशू आता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. सो ये चीज को हम लोग को इजी वे में करना है. तो व्हाट आई हैव डन, सेक्शन 201 से रिलेटेड एक मैंने जो जजमेंट बुक था, जो जजमेंट मेरे ऑलरेडी रिसर्च किए हुए थे, वो एक सिंगल पीडीएफ मैंने नोटबुक एलएम को दिया. उसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे आप पूरा कंपाइल करके दीजिए. सो सी
After giving this prompt, notebook and LM has given me this entire proper data in my format, right? कि जैसे मुझे डेटा होना था असेसमेंट ईयर कौन सी कोड का है, उसके की फैक्ट्स क्या है। अब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको ड्राफ्ट करना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस। सी की फैक्ट्स आर देयर। हमें अगर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, हमें यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है कोई कोई अपील्स में या कोई कोई केसेस में। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट ड्राफ्टिंग, यानी अगर आपको एक सिंगल अपील भी फाइल करना है तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स हम लोग को ड्राफ्ट करते करते 2-3 घंटे निकल जाते हैं बहुत बार। ये दिस इज द कॉमन थिंग विच हैपेंस विद एवरीवन। इफ वी हैव अ न्यू केस, सो व्हाट वी कैन डू, सिमिलर टाइप ऑफ केसेस को हम लोग पहले यहाँ पे सम अप कर लें और यहां से हम लोग ड्राफ्टिंग का कुछ यूज करके हम लोग हमारे रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट आई हैव गिवन, it has given me the summary. Second thing which you can do, see, I have prepared one good prompt. You are acting as a senior tax litigation counsel. From the uploaded single PDF containing multiple judgments, analyze all cases and extract कॉमन एंड रिकरिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील। मैं उसे बोल रहा हूं कि ये 15 जजमेंट्स में से आप मुझे ग्राउंड्स ऑफ अपील आप ये एक्सट्रैक्ट करके दीजिए कॉमन वाले। टिपिकल लीगल आर्ग्यूमेंट क्या रखे गए थे वो भी आप एक्सट्रैक्ट करके दीजिए। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और फॉर्मेट्स एक्सट्रैक्ट करके दीजिए और सेक्शन वाइज लीगल प्रोपोजिशंस मुझे आप कोर्ट्स के एक्सट्रैक्ट करके दीजिए। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस प्रॉम्प्ट and I am pasting this prompt in NotebookLM. Simple. I have not made my mind, मैंने अभी ड्राफ्टिंग चालू नहीं किया है, बट बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी ड्राफ्टिंग अगर मेरे पास ऑलरेडी केस लॉज है, कोई किसी काउंसिल ने अगर रिप्रेजेंट किया है केस, आई कैन यूज those submissions for my drafting, right? So simply I have done that and it has started generating data for me in to draft new appeal for my client. I'll just reconnect you again. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे क्लाइंट है, वो क्लाइंट असेसी को नोटिस आया है सेक्शन 201 में फॉर असेसी इन डिफॉल्ट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम ये देख रहे हैं कि वो नोटिस को हम लोग कैसे रिप्लाई करें एंड वंस अगर वो नोटिस के बाद असेसिंग ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है तो उसके अगेंस्ट हम लोग को सीआईटी और आईटेक में अपील कैसे फाइल करना है वो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। उसका फर्स्ट स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि भाई रिसर्च कैसे करना है केस लॉस का। तो मैंने एकदम सिंपल चीज किया, ऑल जजमेंट्स आई हैव गैदर्ड, आई हैव अटैच्ड दोस जजमेंट्स इन नोटबुक एलएम एंड देन आई हैव सिंपली गिवन वन प्रॉम्प्ट जहां आई विल शेयर द प्रॉम्प्ट जहां पे मैं उन्हें बोल रहा हूं कि ये जजमेंट्स में से ग्राउंड्स ऑफ अपील आप एक्सट्रैक्ट करके दीजिए, लीगल आर्ग्यूमेंट्स मुझे एक्सट्रैक्ट करके दीजिए और उससे रिलेटेड सेक्शन वाइज सबमिशन मुझे आप एक्सट्रैक्ट करके दीजिए। सो आई एम गेटिंग द आंसर। सी आई गॉट टू द पॉइंट आंसर। केस एनालिसिस का मुझे आंसर मिला। कॉमन एंड रिकरिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील कौन से गए, जस्ट आई टोल्ड यू कि भाई मुझे ग्राउंड्स कौन से रखने हैं ये डिटरमाइन करना इज अ टफ थिंग, राइट? तो उससे रिलेटेड जितने जजमेंट्स हैं ऑलरेडी कोर्ट्स में गए हुए हैं उससे आप यूज कीजिए और वहां पे जो भी ग्राउंड्स है, लेट्स से सेक्शन 201 में एक लिमिटेशन का ग्राउंड है जो we may miss during our studies. So limitation पे someone has quoted the ground, someone has quoted the ground related to jurisdictional fact, someone has quoted different grounds for the merits, important phrases or language patterns. Now litigation drafts जो है, मुझे पार्ट 2 मैंने लिटिगेशन के ड्राफ्ट भी इसको एक्सट्रैक्ट करने बोला था। So I got the model grounds of appeal as well. See, this ready-made grounds I am getting, not necessary to use all this ground. मेरा जो केस है वो मैं इसमें से कुछ पोर्शन यूज कर सकता हूँ इन हैंड एंड आई कैन गेट दी थिंग कि भाई इसमें मुझे ये चीज भी मैं रख सकता हूँ क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील में। सो सी, ऑन लिमिटेशन देयर इज वन ग्राउंड, on jurisdictional fact there is one ground, on merits there are few grounds, right? And they have extracted me how I can proceed to prepare written submissions as well. I have done nothing, I have just done what different judgments लिया है,
डिफरेंट जजमेंट्स को नोटबुक एलएम में दिया है और उसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, व्हाई नोटबुक एलएम, व्हाई नॉट अदर टूल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। नोटबुक एलएम जो है वो रैक के कंसेप्ट पे वर्क करता है। आप जो डेटा इसे प्रोवाइड करते हैं तो वो डेटा वो पर्टिकुलर पीडीएफ के बेसिस पे आपको ये आंसर देगा। इट विल नॉट हेल्यूसिनेट, और इवन इफ इट हेल्यूसिनेट्स इट विल बी वेरी मिनिमम, right? So that's why you can use NotebookLM for this activity. So what I can do, I can directly copy paste this. मुझे मेरे ग्राउंड्स भी मिल गए, कुछ रिटर्न सबमिशंस भी मिल गए, राइट? ये जो मुझे रिसर्च ग्राउंड्स मिला है, इसको वी कैन यूज व्हाट, वेयर वी कैन यूज क्लॉड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील। जो मेरा केस है उससे रिलेटेड मुझे ग्राउंड्स बनाने हैं, रिटर्न सबमिशंस बनाने हैं, तो आई कैन यूज आउटपुट ऑफ नोटबुक एलएम to prepare grounds of appeal, written submission and statement of facts by using Claude. Got my point? हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया परप्लेक्सिटी से। परप्लेक्सिटी से हमने रिसर्च निकाला केस लॉस का। मैंने उसमें एग्जांपल लिया था कि भाई जीएसटी का केस का रिसर्च मुझे कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो वी हैव यूज्ड डीप रिसर्च फंक्शन। यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ केस, आप डीप रिसर्च फंक्शन यूज करके आपका रिसर्च विद द हेल्प ऑफ परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और चैट जीपीटी, इसके डीप रिसर्च के साथ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी डीप डाइव इनटू नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम में हमने हमारे जो जजमेंट्स थे वो हमने अपलोड किए, और नोटबुक एलएम का जो आउटपुट था दैट वी आर यूजिंग फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स फॉर अवर केस, राइट? तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है चीजें। सी आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द फोल्डर। लेट्स से मुझे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक शो कॉज नोटिस फॉर इजी रेफरेंस रिडेक्ट करके रखा हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो एआई टूल्स को आप दे रहे हैं वो डायरेक्टली आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, पैन नंबर एंड अदर थिंग्स, ये आप डायरेक्टली अपलोड ना करें। इट शुड बी प्रॉपर्ली रिडेक्टेड। You may use many other tools in order to redact any particular notice. There are offline tools available as well for this. So ये मैंने redact करके रखा है show cause notice की कॉपी। I am just going to Claude. In Claude मैंने simple login किया है। It's a free version. Nothing I have done. कोई मैंने pro version इसमें use नहीं किया है। I am going to new chat option. New chat option में आप जाइए। सिंपल यहाँ पे अटैचमेंट्स का ऑप्शन है। आप आपके जो भी फाइल्स आपको अटैच करना है, यू कैन अटैच दोज फाइल्स। आई एम अटैचिंग दिस शो कॉज नोटिस। इट इज अ रिडेक्टेड शो कॉज नोटिस कॉपी, जो शो कॉज नोटिस मेरे को डिपार्टमेंट ने दिया था, एंड मैंने नोटबुक एलएम से अभी जस्ट रिसर्च कॉपी किया है, राइट? ये रिसर्च को मैंने कॉपी किया है और मैं यहाँ पे जस्ट एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं। आई हैव, आपका प्रॉम्प्ट डिटेल रहना चाहिए कि कंसीडर योरसेल्फ एज अ सीए एंड अ क्लाइंट हैज अप्रोच्ड अस सो एंड सो। आपको डिटेल प्रॉम्प्ट देना है। आई एम जस्ट इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई एम गिविंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट। आई हैव रिसीव्ड एंड अटैच्ड दिस शो कॉज नोटिस, प्रिपेयर रिप्लाई फॉर द सेम। यू मे यूज दिस। मैं उसे कॉपी कर दिया हूं जो नोटबुक एलएम से मैंने कॉपी किया था, राइट? I have just given this prompt and I have just clicked the submit button. So Claude has started doing work for me. वो जो मुझे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आया था, वो रिप्लाई में नोटबुक एलएम का जो रिसर्च है वो क्लॉड ने प्रॉपरली यूज भी करना शुरू कर दिया है, एंड वो शो कॉज नोटिस को वो प्रॉपरली मुझे आंसर प्रॉपर बना के दे रहा है ऑन मेरिट। सी वहां पे डिफरेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स थे। अगर हम लोग नोटबुक एलएम का रिसर्च
और हमारा क्लॉड का यूज करते हैं, तो ये केस में हम लोग को टू द पॉइंट जो हमारा रिसर्च वाला वर्क है, बट इफ यू यूज क्लॉड स्टैंड अलोन, तो वहां पे हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट्स विच वी डोंट वांट, वो भी आपको आपके शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में कवर हो जाएंगे. बट इफ यू वांट अ करेक्ट गुड रिलायबल ड्राफ्टिंग, you should use notebook lm along with Claude, so that आपको टू द पॉइंट जो आपका केस है उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर रिसर्च मिलेगा. सी आई गॉट दी वेरी क्लियर ड्राफ्टिंग फ्रॉम क्लॉड. उसने प्रॉपरली जो ग्राउंड्स है जो नोटबुक एलएम से निकले थे, सी जुडिशियल सपोर्ट भी जो हमारे केस लॉस थे वो उसने यहाँ पे टेकन अप किया है. This will minimize or reduce these chances of hallucination if you do drafting in this manner. How? Use perplexity for deep research. Second, use notebook LM after compiling different types of judgments, and then use plot for drafting of show cause notice reply. Simple procedure, राइट. अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ मेरे केस से रिलेटेड इसे कुछ अपडेट करना है, तो जस्ट अपडेट इट बाय गिविंग द फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स कि यहाँ पे यू हैव मिस सो एंड सो, माय केस इज दिस, just write this thing and you can implement it in the reply. This is how you can do show cause notice reply. Now next activity, what we will do, we will see how you can draft grounds of appeal. Once you receive the order copy of assessing officer, then हमें CIT appeal में appeal file करना है, right? तो CIT appeal के लिए this was the reply which we are going to submit to assessing officer. assessing officer इसके basis पे आपको let's say कुछ judgment आपको pass करना है, ठीक है. अब वो judgment को let's say it has passed this judgment. I have made one order copy as well related to section 201. I am taking section 201 case just because I had opportunity to represent one client related to that, and it was readily available for demonstration. So I use section 201 as a demonstration section. Now what I am doing, हम अब सीख रहे हैं कि कैसे हम सीआईटी या ट्राइब्यूनल, लेट से मेरे को सीआईटी को अपील फाइल करना है, तो सीआईटी में सिंपल आपका जो भी ऑर्डर कॉपी है उसे आप पहले रिडेक्ट कीजिए. रिडेक्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग, आप एज इट इज ऑर्डर को मत अटैच कीजिए कोई भी एआई टूल में, जस्ट रिडेक्ट इट ऑफलाइन. ऑफलाइन रिडेक्ट करने के बाद आप उसे अटैच कर सकते हैं. सो आई हैव डन दैट. मैंने सेक्शन 201 का ऑर्डर कॉपी एक रेडी अवेलेबल रखा था. एंड नाउ what I am doing, I am again going to notebook LM, right? notebook LM का जो रिसर्च पोर्शन है ये मैंने कॉपी किया है. एंड व्हाट प्रॉम्प्ट आई एम डूइंग, गिविंग, मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, आई हैव रिसीव्ड दिस सेक्शन 201 order copy. I want to file appeal before CIT appeal. Draft statement of facts, grounds of appeal, and written submissions. Just I have given this prompt and I have attached the research. यहाँ पे Claude will start doing the work for me. ये मुझे पूरा अपील का डॉक्यूमेंट बना के दे देगा. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो भी है बिफोर सीआईटी अपील, अपीलेंट की डिटेल्स आ गई, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पूरे आ गए. नाउ इट हैज स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स. ये जो एज पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हम लोग अगर ऑलरेडी किसी के जजमेंट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्राइब्यूनल, ये अगर कोई जजमेंट्स को ऑलरेडी अगर हम एक्सट्रैक्ट करके समरी बना के कहीं सेव रख दे रहे हैं, इसका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर मैटर, और फिर आप अगर हम हमारे केस से रिलेटेड इसको यूज कर रहे हैं, तो वी विल गेट दी बेटर आउटपुट एंड रेडी टू यूज आउटपुट. वहां पे हम लोग को जो चेंजेस करना है वो बहुत मिनिमम हो जाता है. सो
it has given me the grounds of appeal, it has given me the statement of facts. You can use ChatGPT and Gemini as well for this activity, but Claude performs better when it comes to drafting as per my experience. Rest, अगर किसी का ChatGPT train किया गया है तो ChatGPT will give you good answer if you have trained your ChatGPT in that manner. So it has drafted me grounds of appeal, and now it has drafted me written submissions as well. In this way, you can use Claude for drafting, you can use Perplexity for research, you can use NotebookLM for doing research and getting extracts and drafting different types of grounds, right? अब यहाँ पे नोटबुक एलएम का मेरे को एक इम्पोर्टेंट फीचर जो यहाँ पे सिंस इन स्टार्टिंग कुछ लोगों ने इसको यूज नहीं किया है नोटबुक एलएम को, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस वन मोर फीचर. लेट्स से नोटबुक एलएम में मेरे पास एक आईसीआई का मैंने जस्ट एक वीडियो लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, देयर वाज वन वेबिनार ऑफ आईसीआई. सो आई वेंट टू दैट वेबिनार, यूट्यूब का जस्ट मैंने वो वेबिनार का लिंक कॉपी किया, एंड यू कैन यूज दैट लिंक एंड कॉपी पेस्ट एंड एड सोर्सेज में आप जाके वो पेस्ट कर दीजिए यूट्यूब का लिंक, यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा. दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आईसीआई वेबिनार इन्होंने किया था अभी, उसका जस्ट ये लिंक है. ये जस्ट फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, लेट्स से ये 2 आवर्स का ये वीडियो था, यहां हमारे लिटिगेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को मिल सकती है. इन नोटबुक एलएम देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड डेटा टेबल. प्लीज सी दिस फंक्शन. My screen is visible, right? So there is one function called data table. I just explored that table, data table. Just click on that data table function. I had generated one output file of this data table. यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट आईसीआई के वो 2 आवर्स के वीडियो में जितने भी जजमेंट्स थे, सी आई विल शो यू दिस आउटपुट ऑफ दिस डेटा टेबल. दिस वॉज द आउटपुट विच वॉज गिवन टू मी. उसमें केस नेम, साइटेशन आ गया, लीगल प्रोविजन आ गया, सब्जेक्ट मैटर आ गया, की लीगल प्रिंसिपल क्या उसमें एस्टेब्लिश हुआ है, कोर्ट स्टेटस एंड सोर्स. दिस ऑल थिंग केम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो. You can do as much analysis as you want related to your subject matters from reliable YouTube videos. ICAI there are many videos related to income tax. There are many videos related to GST. Just go there. मैंने एक link landmark judgments of GST copy किया था, and I use this data table function. Right? I can give many follow-up prompts. I'll just show you those prompts. See, you can use this prompt as well. Assume I am arguing before CIT appeal. Based on this source, prepare a litigation ready note covering strongest 5 legal propositions supported by this judgment. Extract case references, suggested way to present the case before appellate authority, risk areas, and other things. In this way, you can use NotebookLM to do research, to use NotebookLM for getting the data to draft the appeal before CIT and ITET. Now, हमने अभी देखा कि भाई रिसर्च कैसे करना है, वो देख लिया. देन नोटबुक एलएम को कैसे यूज करना है. देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ नोटबुक एलएम. सिंस टाइम इज वेरी लिमिटेड, already I have exceeded 5 to 10 minutes, but if डिटेल नोटबुक एलएम पे हमारा कोई अगर सेशन रहा तो आई कैन एक्सप्लोर यू वन बाय वन फंक्शन ऑफ नोटबुक एलएम एज वेल. नोटबुक एलएम हमने एक्सप्लोर किया. जस्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एक इंपॉर्टेंट टूल मुझे आपको बताना है. हम रिसर्च कर लिए, अपील फाइल कर लिए, राइट. अब इसके बाद क्या चीज है, सीआईटी के हमें फेसलेस में बार बार नोटिसेस आते हैं.
ये नोटिसेस में हम लोग ट्रैक रख नहीं पाते। इफ यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, आपका कौन से क्लाइंट में कौन सा नोटिस किस दिन आ रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन आ रहा है, सिंस क्लाइंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, क्लाइंट को मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलता है कि भाई नोटिस क्या आया है एंड आपको चीज क्या उसमें आ रही है, राइट। तो इस केस में there is one powerful tool, there are many tools but I am used to of this tool, that's why I am showing you. There is one tool called notice cpc. In notice cpc I am just doing one login. ये टूल के थ्रू आप आपके सभी नोटिसेस का ट्रैक रख सकते हैं। आपने अपील फाइल कर दिया, आपने अपील फाइल करने के बाद जो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे नोटिसेस आते हैं, उसका डे टू डे ट्रैक रखना हमारे लिए बहुत बहुत पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू मल्टीपल क्लाइंट्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज, we can take help of any of such type of tools. Notice cpc is one of them. So आपके जितने भी इनकम टैक्स के क्लाइंट्स है या जो भी आपके क्लाइंट्स है, आई हैव डन दिस, व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी क्लाइंट्स है उसको वन टाइम इसे लिंक कर दिया है विद दिस टूल। यहाँ पे ऑप्शन है एड न्यू क्लाइंट का, यू मे एड क्लाइंट्स इन बल्क एज वेल। ये क्लाइंट को आप ऐड कर दीजिए सिंगल लिस्ट में एंड देन आप डेली बेसिस पे जस्ट बाय गिविंग 5 मिनट्स टाइम यू कैन ट्रेस द डैशबोर्ड। आपके अगर लेट से मैंने यहाँ पे 46 क्लाइंट्स मेरे लिंक किया है, तो ये 46 क्लाइंट्स को मुझे डेली बेसिस पे लॉग इन करके नहीं देखना है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट लॉग इन दिस स्क्रीन। यहाँ पे कितने मुझे नोटिसेस आ रहे हैं, लेट से न्यू नोटिसेस मुझे लास्ट एक दो दिन में इतने, लास्ट 30 डेज में मुझे ये 10 में नोटिस आए हुए हैं। तो व्हाट आई कैन डायरेक्टली गो टू दिस 10 सिंस आई हैव ऑलरेडी लिंक दिस विद नोटिस सीपीसी। सो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नोटिस में आई कैन डायरेक्टली डाउनलोड, क्या नोटिस है, दिस इज द नोटिस, हियरिंग नोटिस किस में आया है ये मुझे पता चल जाता है। what I want to tell you, you may use any tool, there are many to manage the notices. So you may, after filing the appeals, you need to keep track of all the clients, right? So you can use this tool to keep track of all clients के भाई आपको डेली बेसिस पे क्या नोटिस आ रहा है, किसमें हियरिंग्स आई है, यहीं से आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट से मुझे कहीं किसी का ऑर्डर आया है या कोई मेरे ऑनगोइंग नोटिसेस कितने हैं, तो ये मेरे ऑनगोइंग नोटिसेस, ये इतने केसेस मुझे चल रहे हैं मेरे पास। ये केसेस को मैं इफ आई वांट टू डीप डाइव, तो आई कैन go there, I can just click it and get the data. Instead of doing single login, you can use this tool to keep track of all the notices. If I receive any orders, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्डर्स का ऑप्शन है। सिंस लास्ट 30 डेज में मुझे कोई ऑर्डर किसी का आया नहीं है मेरे क्लाइंट में, तो दिस स्क्रीन इज ब्लैंक। बट या ऑनगोइंग नोटिसेस मेरे अगर 76 मेरे असेसमेंट्स चल रहे हैं एज पर दिस रिपोर्ट, तो आई कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल द नोटिसेस विद दिस अमेजिंग टूल। इन दिस वे यू कैन यूज notice cpc to keep track of all the notices once you file the appeal. Even if you have not filed the appeal or even if you have show cause notice related thing, this tool will help you out to identify के कौन से आपके केस में कौन से क्लाइंट में क्या चीज का नोटिस आया है। यू कैन कीप द ट्रैक, यू कैन डायरेक्टली गिव द रिप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस टूल। इन दिस वे यू कैन use notice cpc to keep track of all the notices. Now what I will do, I will sum up the things जो हमने आज यहाँ पे कवर किया है। So सबसे फर्स्ट what we have done, we have done, हमने जीएसटी की 2 केस स्टडी लिया जहां पे हमने डीप रिसर्च का फंक्शन सीखा विद द हेल्प ऑफ परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च फंक्शन, चैट जीपीटी डीप रिसर्च फंक्शन और जेमिनाई डीप रिसर्च। आप कोई भी टाइप का आपका डीप रिसर्च रिलेटेड टू टैक्स लिटिगेशन आप ये डीप रिसर्च फंक्शन से आप कर सकते हैं। देन वी वेंट टू नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम में हमने डिफरेंट जजमेंट्स को एक जगह लेके आए, वो जजमेंट्स का हमने डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स देके उसे एनालाइज किया। वी गेट दी डेटा फ्रॉम नोटबुक एलएम, देन वी यूज क्लॉड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ शो कॉज नोटिस ऑफ रिप्लाई। आप आपके कोई भी शो कॉज नोटिस का रिप्लाई उससे आप कर सकते हैं।
You can give notice copy to Claude by redacting. You can use research of NotebookLM, and then you can draft your show cause notice reply. In similar way, you can draft grounds of appeal, written submission with the help of NotebookLM and Claude. Then we explored Notice CPC tool for keeping the track of all the notices. In this way, you can leverage AI for your tax litigation proceedings. So, with this, I can say, can AI replace humans? The answer is no, as humans have created it. Can we integrate AI in our life? The answer must be yes. So, with this, I conclude my presentation and demonstration related to today's topic of leveraging AI in tax litigation. Once again, I thank ICAI Pune branch for giving me this opportunity to share the knowledge with all the members. Thank you very much. You may connect with me on this number which I have given in the screen, और कोई भी query रहा तो you may ask now as well. Yeah, thank you so much. Over to you, ma'am. Yes, thank you, sir. On behalf of Pune branch, we thank you very much to CA Pratik Sadrani sir for address for accepting our invitation and delivering the address. Thank you, sir. Thank you. If any questions are there, I would be happy to take up any. Hello. Yes. Yeah, this notice CPC tool is, can we use this for GST notices as well, or? Yes. I am using this for GST notices as well and income tax notices as well. Okay. Yeah. Hello, sir. Manoj this side. So for this Notice CPC tool, we need to share the login credentials with that tool, right? The income Yeah. tax With and the GST. login, yeah. What I just told you, it was a actually paid version wala tool hai ye. There are many Okay. similar tools, but since I'm using this from starting, so I demonstrated it for easy purpose जो मैं use जो हम लोग हमारे ऑफिस में use कर रहे हैं. So you may connect with the team. वो हमें यानी मैं जो हमारे जितने क्लाइंट्स थे हमने उसे इंटीग्रेट किया एंड Okay. जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का उन्होंने हमें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके दे दिया एंड नाउ वी आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम दैट्स व्हाई आई शेयर्ड दिस विद यू. Okay. Understood. Thank you. Thank you very much, sir. यस सर. Hello, यस सर. hello. Yes, sir. Which is the best tool for legal analysis? If sometimes you see law is very complex and we need to understand the certain provisions. So, which tool is best for analysis of law? सर करंटली इफ यू टेल मी द फ्री टूल जो मैं मेरे ऑफिस में सभी लोग यूज कर रहे हैं एंड इवन आई एम यूजिंग इट्स नोटबुक एलएम. बहुत पावरफुल टूल है. उसे इतने तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि मैं अगर डेली यहाँ पे 3 आवर्स का भी मेरे को अगर टाइम मिले ना तो भी मैं वो टूल को कंप्लीट ना कर पाऊँ. इट्स वेरी अमेजिंग टूल फॉर रिसर्च फंक्शन. बाय नोटबुक एलएम आई एम टेलिंग यू कि भाई नोटबुक एलएम जो कंसेप्ट पे बना है वो रैक कंसेप्ट पे बना है. रैक इज अ कंसेप्ट जहां पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं उसके बेसिस पे इफ यू वांट टू डू रिसर्च देन वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वो पर्टिकुलर लिंक से आपको रिसर्च करके देगा and that too in the language which we want. And they have introduced since वो गूगल का है तो देयर आर मैनी थिंग्स जो उन्होंने एक अच्छे फीचर्स उसमें दिए हुए हैं. ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप फीचर इज देयर वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. सो एज पर मी ये सो फार जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो नोटबुक एलएम इज गुड इफ यू आर टेलिंग रिलेटेड टू फ्री टूल. व्हेन इट कम्स टू पेड वर्जन तो देयर आर मैनी जैसे अभी टैक्समैन एआई ने भी उसका लेके आया हुआ है केस रिसर्च के लिए. सो इट्स अ पेड वर्जन टैक्समैन एआई. देन देयर आर अदर एआई टूल्स एज वेल. लेक्सिस लेगिस करके भी उन्होंने भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट उनका डेवलप किया है. दिस ऑल आर पेड वर्जन फॉर रिसर्च यानी केस लॉ की रिसर्च से रिलेटेड. बट व्हेन इट कम्स टू फ्री टूल आई कैन रिकमेंड यू नोटबुक एलएम. Okay, sir. Thank you. And sir, one more thing. जो आपने टेक्समैन का बोला. हाँ. हेलो.
यस सर, जैसे हमारा आईसीआई ने ओपन एआई के साथ कोलाबोरेशन है, हमारा आईसीआई बेसिकली ओपन एआई का प्लेटफॉर्म यूज करता है। ये टेक्समैन किसका प्लेटफॉर्म ये लोग यूज करते हैं? एक्चुअली टेक्समैन का सोफा जो यानी मेरे नॉलेज में उन्होंने जो बैकएंड में दे आर डूइंग विद सम बिग बिग फोर्स के साथ ही वो प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं। सो देयर आर मल्टीपल, मोस्टली दे हैव क्रिएटेड ऑन चैट जीपीटी और उसका बेस है, बट साथ में उनका पूरा खुद का ये है, क्या बोलते हैं, जो रिसर्च जो है केस लॉस, उनके खुद के जो डिफरेंट ऑथर के बुक्स है वही उन्होंने बैकएंड में दिए हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। वो उनका जैसे आईसीआई के अपना बैकग्राउंड मटेरियल है आईसीआई के पास, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं टेक कंपनी की। ये लोग भी किसी के साथ शायद टाई अप होगा किसी टेक कंपनी के Yes, साथ। yes, tech team भी है, and as per my latest knowledge, they were doing in coordination with Big Four. तो उनकी एक यस टेक सर। टीम बनी हुई है, and they are doing good in it. यस सर सर। और राइटिंग के लिए कौन सा बेस्ट है सर? राइटिंग के लिए सर मैं अभी क्लॉड यूज कर रहा हूँ सर, फॉर ड्राफ्टिंग पर्पस क्लॉड यूज कर रहा हूँ। और अगर आपका चैट जीपीटी आपके हिसाब से ट्रेंड है, अगर लेट से आपने 4-5 मंथ से आप उसे कंटिन्यूस डेली 2-3 बार यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी से भी अच्छे आंसर यू कैन गेट, क्योंकि आई एम यूजिंग बोथ। यानी मैनी पीपल से दैट कि उनका क्लॉड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट मेरा क्लॉड के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और चैट जीपीटी के साथ भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है। स्टार्टिंग 8-10 आंसर्स आपको थोड़े से लगेंगे कि वी नीड टू मेक चेंजेस, बट वंस आप एक बार उसे आपकी हैबिट आ जाती है, यानी चीजें आपका टोन पता चल जाता है, हाउ यू वांट द आंसर्स, उसके बाद चैट जीपीटी भी अच्छे यानी आपको ड्राफ्टिंग करके दे सकता थैंक यू सो मच। है। सर एक क्वेश्चन ये था, आपने नोटबुक एलएम में सोर्स में 10 जजमेंट्स फॉर समरी पीडीएफ उनको बेसिक दिया है हाँ, फॉर एनालाइजिंग। तो बरोबर। सर अगर हमारे पास ये 10 जजमेंट्स नहीं है तो हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन, मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। तो सी सिंपल एकदम, बहुत गुड क्वेश्चन इज दिस। यानी आप यहाँ पे परप्लेक्सिटी में जाइए, ठीक है। परप्लेक्सिटी में परप्लेक्सिटी में व्हाट यू कैन डू, लेट्स से मुझे प्रैक्टिस करना है जीएसटी में, राइट। तो जीएसटी की अगर मेरी प्रैक्टिस है, तो सबसे फर्स्ट मैं 2-3 आवर्स किस में स्पेंड करूंगा, फॉर माय डेटाबेस, फॉर गैदरिंग द डेटाबेस, सबसे फर्स्ट। अब डेटाबेस कहां से लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट यू कैन डू, आप जाइए अलग अलग इसमें, जैसे मैंने अभी डेटाबेस लेने के लिए जस्ट यूट्यूब में मैं आई वेंट टू यूट्यूब, यूट्यूब में जाके मैंने जीएसटी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ आईसीआई का मैंने वेबिनार लिया। सिमिलर यू कैन डू फ्रॉम गुड वेबसाइट्स, यानी जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, लेट्स टेक्समैन है, क्लियर टेक्स है। लेट्स से मैं आपको जस्ट एक जो प्रोसीजर मैंने बैकएंड में किया, आई एम जस्ट शोइंग यू जीएसटी लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। मैं इसमें आईसीआई का सोर्स डाल दे रहा हूं। लेट्स से यहाँ पे मेरे को जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लिंक इन नोटबुक एलएम, और नोटबुक एलएम में मैंने डेटा टेबल बना लिया। डेटा टेबल का जो बनने के बाद मुझे इसका रेफरेंस यहाँ से मिल गया, दिस वाज द डेटा टेबल। मैंने सिंपल यही लिंक जो मुझे आई थी आईसीआई की, वही मैंने यहाँ पे किया था, और ये पूरा मुझे आंसर मिल गया। अब ये जजमेंट्स को डाउनलोड कहाँ से करना, ये एक क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने मेरा प्रैक्टिस एरिया 201 का मुझे अगर करना था, तो as a many tool what I am doing, you may use different subscription models as well. There are many like clear text का है, टेक्समैन का है, टेक्सपॉप का है, बहुत सारे हैं। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं, जजमेंट डाउनलोड करने के लिए, तो मैं जनरली लीगल कानून यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हैंडी लगता है मुझे, और अभी ये यानी दे आर नॉट चार्जिंग। सो लीगल कानून में मैं डायरेक्टली जाके केस क्लॉज की रिसर्च मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को सेक्शन 201 लीगल कानून का मैं जजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आज अपन ने सेक्शन 201 देखे हैं। तो सेक्शन 201 के जो मेरे जजमेंट्स हो गए, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ मोस्ट रिसेंट से, और यहाँ पे मैं केस लॉ यहाँ पे देख के व्हाट आई जस्ट डू, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और सिंपली उसको गूगल में जाके आई ट्राई टू फाइंड आउट द पीडीएफ कॉपी, डाउनलोड कोड कॉपी और गेट इन पीडीएफ।
दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आपका जो भी प्रैक्टिस एरिया है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन जीएसटी, यू कैन हैव योर ओन डेटाबेस फर्स्ट. यानी अगर आईटीसी वाले क्लॉज में आपको करना है, आप आपके आईटीसी से रिलेटेड पूरे सभी जजमेंट्स का आप डेटाबेस बना लीजिए. वो डेटाबेस को आप नोटबुक एलएम में डालिए, फिर उसके बाद आप रिसर्च कीजिए. दिस इज द बेस्ट वे फॉर यूजिंग दिस. सो इन दिस वे यू कैन डाउनलोड जजमेंट. जो आपका क्वेरी है कि भाई जजमेंट्स कहाँ से आए, तो दिस इन दिस वे आई हैव गैदर्ड द जजमेंट्स. यानी am I okay with this query, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. So can we end the session? Yeah, perfect, perfect. Yeah. If Okay, all sir. questions are resolved, we may. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you Thank all you. participate for joining the session. And there are few comments that to share the prompts. What I'll do, I'll share the prompts in group. No issue. जो आज के Yes. हैं वो I will share. और if want तो यहाँ पे current meeting के बाद I will share. Yeah. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank